yesterday we have covered this accessing individual element. Last topic यहाँ तक हमने कर लिया था. t minus 5 plus 6 equals to t1. Today we continue from here. Difference from list. As you see, list and tuple both are almost same according to the function wise, according to the property wise, both are same, but only difference is that list is a type of mutable, whereas tuples are the type of immutable. Means, look this, tuples are not mutable. Not mutable means immutable. Means you cannot change individual element of a tuple in place, whereas in list you can change. लिस्ट में पॉसिबल है लेकिन टपल में पॉसिबल नहीं है. नाउ सी दिस, that is following statement is fully valid for list. For list means like L, I means position. Position means index value. Index value like 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है यहाँ पर. Equals to element. Suppose that you want to insert या update a new value from an existing value at index number 1. So you can change in list, but you cannot change in tuple because tuple is a type of immutable, whereas list is a type of mutable. Mutable means changeable होता है और immutable means not changeable. Look this, tuples are similar to list in many ways like indexing, slicing, and accessing individual elements, but they are different in the sense that tuples are immutable while lists are not. Clear? Tuples are immutable. सिर्फ एक ही चेंज है. Tuples are immutable. Tuples immutable होंगे और list mutable होगी. इतना ही चेंज है बस. Next, traversing a tuple. Traversal of a sequence means accessing and processing each element of it. Each and every element of it. Means you can traverse each and element through the for loop. लिखा ना? The for loop makes it easy to traverse or for loop over the items in the tuple as per the following syntax. देखो syntax क्या है? For item in tuple. Item means here variable name you have to write. In tuple. Tuple means provide list of items. Look this example, T equals to PYTHON. This is the tuple of characters. देखो ये tuple है, किसकी tuple है? Characters की. Because each and every characters are separated by commas. ठीक है, और कोट्स कौन से लगे? सिंगल कोट्स लगे. That means it is character constant. अब क्या लिखा है? For A in T. A in T that means from this tuple. कौन सा? T is a tuple. यहां से क्या हो रहा है? एक एलिमेंट पिक हो रहा है जो किसमें स्टोर होगा? वेरिएबल A में. एंड इट इज डिस्प्लेड बाय दिस. मींस A में क्या आएगा? A में इंडेक्स पोजीशन. इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 0. First element is stored at index number 0, then second one is 1, third 2, this one is 3, 4 and 5 like this. So first value is 0 and T0 index पे value क्या मिलेगी? P. So it will display P. Next time the value of A is 1, then print T1, 1 index पे Y, next element Y. Similarly, next element T, then H, then O, and at last is N. In this manner, it will traverse each and every element because tuple is a part of a sequence. और sequence में क्या होता है? हर एक element index के according arrange होगा. Index sequence के manner में होगी like 0, then 1, then 2, then 3, then 4, and then 5. Is it clear? Reply immediately. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. Now see this program. Program to print elements of tuple hello is in Python fun and question mark is separate line along with elements both indexes means positive as well as negative. means आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी शो करनी है और साथ में बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी शो करनी है. ठीक है. सो फॉर दिस
you have to store these tuple hello isn't python fun question mark in a variable. तो variable name is t. ये पूरी एक tuple है जिसको हमने t में स्टोर कर दिया. And then find the length of this tuple. So length is a function to count the length of this tuple. Length bracket में t. Length bracket में t, that means count the length of this tuple 1, 2, 3, 4 and 5. So this time its length is 5. तो length वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी आपकी 5. Then for a in range 5 because the value of length is 5. Now it start from 0 and finished at last index 4 because size -1 साइज में लेंथ -1 कितनी होगी 5 -1 4 तक जाएगा. तो स्टार्ट करेगा 0 से एंड देन फिनिश 4 पे. लुक दिस. अब फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ a is 0 at indexes is written in quotes means it will display as it is because it's just like a message. Then a value of a is 0, so 0 will here come here at indexes 0. After that and is written inside the quotes, so it will display as it is and ऐसे ही आ गया. Then लिखा है a minus length. Value of a is 0 minus value of length is 5. 0 minus 5, that is -5. -5 and then elements t वैल्यू ऑफ ए इज 0. तो टी 0 पे वैल्यू क्या है हमारी हेलो, तो इट विल डिस्प्ले हेलो. तो पॉजिटिव इंडेक्स इज 0 एंड नेगेटिव इंडेक्स इज -5 फॉर दिस हेलो. इस हेलो के लिए पॉजिटिव इंडेक्स क्या है 0 है और नेगेटिव इंडेक्स -5 है. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम नेगेटिव इंडेक्स को माइनस लेंथ से शो करते हैं नेगेटिव इंडेक्स को. यस लुक दिस. कहाँ गया here forward indexing a e I o u is written forward indexing 0 1 2 3 4 like this and backward indexing start from here. देखो -1 then -2 then -3 then -4 then -5. क्लियर. तो देखो 0 और -5 पर वैल्यू क्या होगी a होगी. तो -5 दैट इज लेंथ. तो माइनस आएगा नेगेटिव इंडेक्स और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो आएगी पॉजिटिव आएगी. क्लियर. यस सर. नाउ नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ a इज 1. अब a की वैल्यू 1 हो गई एट इंडेक्सेस 1 because the value of a is 1. So at indices 1 and value of a is 1 minus length. Value of length is 5. 1 minus 5 that is -4. 1 minus 5. 1 means positive 1 and 5 means -5. So 1 minus 5 that is -4. So -4 will come here. Element t value of a is 1. So t at फर्स्ट इंडेक्स क्या है isn't है. isn't आपका ऐसे पड़ेगा is not है ना. isn't ISN apostrophe then t. Similarly next value of a is 2. Value of a is 2. Index at index is 2 and 2 minus 5 that means -3 element and then display Python like this. Is it clear? यस सर. प्रोग्राम समझ में आया? यस सर. वेरी गुड. देन टपल ऑपरेशंस. Tuple operations. The most common operation that you perform with tuple include joining tuple and slicing tuple. In this section, we are going to talk about the same. Means हम इस दोनों में वही पढ़ेंगे. How we join tuples and slicing the tuples. So join, for joining we have plus operator. Plus means concatenation. So we concatenate two tuples together or two and more than two tuples together. मतलब इन सबको एक साथ क्या करेंगे प्लस कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं. देखो TPL1 टपल 1 की वैल्यू 1, 3, 5 दिस इज टपल 1.
then tuple 2 6 7 8. Now tuple 1 plus tuple 2 means concatenate both the tuples together. So answer is 1 3 5 6 7 8, like this. Look, definition: joining two tuples is very easy, just like you perform addition. The plus operator, the concatenation operator used with two tuples joining two tuples. क्लियर? तो प्लस ऑपरेटर हमारे पास है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे, मींस मर्ज करेंगे दो टपल्स को. Look, another example. Now this time I am having three tuples: tuple 1, tuple 2, and tuple 3. Value of tuple 1 10, 12, 14. Value of tuple 2 20, 22, 24. Value of tuple 3 30, 32, 34, like this. And now concatenate all these tuples. Combine these three tuples together, then tuple 1 plus tuple 2 plus tuple 3, and result will store on in only tuple. Then display the value of tuple. You will get 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34, like this. और definition के लिखिए: the plus operator is used to concatenate three individual tuples to get a new combined tuple TPL. So three individual tuples are tuple 1, tuple 2 and tuple 3. इन दोनों को अगर हमने मर्ज कर दिया, एंड मर्ज करने के बाद फाइनल इज TPL. TPL में वैल्यू आ गई. इज इट क्लियर? यस, अंजलि शाह, सीरियल में ही आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द टप्पल सीक्वेंस. टप्पल सीक्वेंस लाइक दिस टाइम वी आर राइटिंग टप्पल 1 फर्स्ट. तो first value come from tuple 1, then tuple 2 and then tuple 3. If you write like tuple 3 then tuple 2 then tuple 1, so it will give answer like 30, 32, 34, then 20, 22, 24 and then last 10, 12, 14. It depends according to the sequence of tuple. ये जो sequence आप tuple की दे रहे हो इस पे depend करेगा. So this time we are putting here tuple 1 first. So tuple 1 means 10, 12, 14 आएगा पहले. Then tuple 2 value is 20, 22, 24. Then tuple 3 30, 32, 34, like this. ये आएगा. Is it clear, अंजलि शाह? Yes, sir. Next, the plus operator when used with tuple require both the operand must be of tuple type. Means this concatenation operation work only when both the value or both the operands of same type. जब दोनों सेम टाइप के होंगे तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं. जस्ट लाइक यू हैव सीन इन स्ट्रिंग, फर्स्ट वैल्यू इन स्ट्रिंग एंड सेकंड वैल्यू इज आल्सो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं. सिमिलरली लिस्ट प्लस लिस्ट कॉन्कैटिनेट होंगे. सिमिलरली टपल विद टपल कॉन्कैटिनेट होंगे. मींस it must be of same type. Clear? So if you write like tuple plus number, then it will generate error. You write tuple plus complex number, again it will generate error. Tuple with string, generate error. Tuple plus list, generate error. Why? Because both are having different data types. Tuple का data type अलग है, tuple type का होता है. नंबर आपका इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी. लुक दिस एग्जांपल. Tuple 1 equals to 10, 12, 14. 10, 12, 14. This is the tuple 1 and we want to add this tuple with 2, but 2 is in numeric, that is called integer number. ठीक है, it is not possible. That's why it will generate error. लिखा भी आया, can only concatenate tuple not int to tuple. मीन्स हम टपल को कॉन्केटिनेट तो कर सकते हैं लेकिन इंटीजर को हम टपल के साथ मर्ज नहीं कर पाएंगे. ये एरर है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, टपल 1 प्लस एबीसी, और एबीसी इज रिटन इन कोट्स, दैट मींस इट इज स्ट्रिंग, और हियर वी वांट टू मर्ज दिस टपल विद स्ट्रिंग. तो अगेन दिस इज एन एरर. ये एरर होगी हमारी. देखो, कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल्स not str to tuple. Is it clear? Reply. It is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then Yes. very good. Then important thing.
इफ यू राइट लाइक दिस टपल प्लस 3, और आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये समझ में आ रहा होगा कि 3 जो लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, दैट मींस इट इज द फॉर्म ऑफ टपल. नो, इट इज नॉट अ टपल, इट कंसिडर एज अ नंबर. नंबर मींस इंटीजर काउंट होगा ये. कैसे पता चला मुझे? क्योंकि हमने लुक दिस प्रीवियस टॉपिक. Look this single element tuple. Making a tuple with single element is tricky because if you just give a single element in round bracket, Python considers it a value only. That means if you write like this t equals to 1 and then print this t, so it will give only 1. That means it is treated as an integer. ठीक है, ये इसको इंटीजर मानेगा ना कि टपल मानेगा. तो हाउ वी मेक a single element as tuple? By putting comma at last. देखो इस 3 के बाद कॉमा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये टपल बन जाएगा. ये हमने देखा था. ठीक है, कम बैक. नाउ लुक दिस tuple plus 3, then it will generate error. Can only concatenate tuple, not int to tuple. The reason for above error is that a number enclosed in parenthesis is considered number only. इसको क्या मान रहा है? वो नंबर मान रहा है, ना कि टपल मान रहा है. That's why it will generate error. To make it a tuple with just one element, add a comma after the only element. Means you have to add comma after this 3, then only it will add. Look this. This is a tuple 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34. This is the tuple of integer and we want to add this tuple with 3 comma. Now this 3 comma act as a tuple. अब ये tuple बन गया. अब ये easily add हो जाएगा. देखो 3 came at the last. Is it clear or not? Yes, sir. Everyone? Next, repeating or replicating tuples. Repeating or replicating tuples by using this asterisk operator. This is called a replication operator. We can use this asterisk operator to replicate a tuple specified number of times. So it requires one operand as tuple and second operand as an integer type value. Like tuple 1 into 3. That means this tuple value will produce 3 times. The value of tuple 1 is 135. Then you see the output 135, again 135, again 135. How many times? 3 times, because the integer value is 3. यहाँ देखो क्या लिखा है? The asterisk operator repeats a tuple specified number of times and create a new tuple. Then next is, और नोट पढ़ लो. When used the tuples, the plus operator require both operands of tuple type and the asterisk operator requires a tuple and an integer as operand. Means in this operator, means ये वाला जो operator लगा हुआ है, इस operator में you need one operand as tuple and second one as integer, whereas in plus operator, in case of plus operator, you need both the operands as tuple type. दोनों आपको tuple type के चाहिए. Next, slicing the tuples. Slicing means part of tuple. The tuple slice, like stick slice or list slices, are the subparts of the tuple extracted out. You can use indexes of tuple elements to create tuple slices. Now see here. SEQ, that is called sequence, equals to T means tuple starting index value colon stop or last index value. Now see, the above statement will create a tuple slice, namely sequence means SEQ having elements of tuple T on indexes start plus 1, start plus 2,
start plus 3 like this, and last value is stop -1, ये इससे एक पहले रुक जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू इज स्टॉप मीन्स लास्ट इंडेक्स -1. Then recall that index on last limit is not included in tuple slices. ठीक है, टपल स्लाइस जो होती है उसमें लास्ट लिमिट को हम नहीं लेते हैं, चाहे वो लिस्ट हो लिस्ट में भी नहीं लेते हैं, स्ट्रिंग हो स्ट्रिंग में भी नहीं लेते हैं. Clear? Now see this example. TPL, that is called tuple, having elements 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34. These are the elements. Now see with notepad. This one example. 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34. Then index value of this is 0, then minus, sorry, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8. Or this is called forward या पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है. देन -9, आफ्टर दैट -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. This is called negative index. Negative index. Now see this question. Tuple equals to 10, 12, 14, 20, 22, 24, 20, 30, 32, and 34. Now sequence equals to tuple starting index is 3, means it will start from here. यहां से शुरू करेगा because this is the positive index and positive index starting from 3. ये 3 से start कर रहा है तो starting value is 20. Last index that is -3. This is -3. जब ये -3 होगा तो क्या आएगा? -3. Look this. At -3 we will get 30. Yes or no? Last index क्या है? -30. That means 30. -3 पे क्या 30 है? Yes or no? यस सर. है, ठीक है. अब आपने क्या पढ़ा था? लास्ट इंडेक्स से एक पहले वो रुक जाएगा, यही तो पढ़ा था आपने. लास्ट इंडेक्स से एक पहले वो रुकेगा. दैट मीन्स लास्ट इंडेक्स -3 में आप -1 करो तो क्या मिलेगा आपको? -4. -4 मीन्स इट विल स्टॉप हियर. इट विल स्टॉप हियर. -4 आ गया तो मीन्स चला कहां से था? स्टार्टिंग वैल्यू इज 20, देन 22, देन 24. तो इट विल डिस्प्ले ओनली 20, 22 एंड 24. समझ में आया? ये 30 क्यों नहीं आया आपका? 30 जो है वो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स से एक पहले वो रुकेगा. लास्ट इंडेक्स से एक पहले मतलब -3, -1 दैट इज -4, और -4 इंडेक्स पे क्या है? 24. तो इट विल गिव आंसर ओनली दिस 20, 22 और 24. सी दिस आउटपुट 20. सर मैंने किया, मेरा तो दिखाई नहीं रहा है. आंसर नहीं आ रहा? सर मैंने ये किया, दिखाई नहीं रहा. हाँ. इट पाइथन ओपन कर लेते हैं हाथ के हाथ. पाइथन. Now see this. TPL tuple equals to 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30,
comma 32 comma 34 bracket close 10 12 14 20 22 24 30 32 34 then press enter key. After that seq equals to tpl index value from 3 colon minus 3 then bracket and press enter key. Now print seq. Look this answer 20 22 and 24. Yes, sir. Yeah, got it. यस सर, मैंने गलती कर दी थी. Okay, चलो. Now next is for normal indexing, if the resulting index is outside the tuple, means outside the range, then Python raises an index error exception. बट इन केस ऑफ स्लाइसेस, अभी तो नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल में वो इंडेक्स एरर दे देगा, लेकिन स्लाइसेस के टाइम पे स्लाइसेस आर ट्रीटेड एज बाउंड्रीज इंस्टीड एंड द रिजल्ट विल सिंपली कंटेन ऑल आइटम्स बिटवीन द बाउंड्रीज. क्योंकि जब हम स्लाइसेस देंगे जैसे 3:30 दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग स्लाइसेस. ठीक है, ये स्लाइसेस की बात हो रही है तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी. और सिंपली यू राइट TPL 30 देन इट विल जनरेट एरर. क्योंकि 30 इंडेक्स पे कुछ नहीं मिलेगा आपको. जब आप सिंगल दोगे ना TPL 30 देन इट विल जनरेट एरर. और आप दोगे TPL 3:30 तो ये एरर नहीं देगा बिकॉज दिस एक्ट एज अ स्ट्रिंग स्लाइस कि हम इसमें से कुछ पार्ट कुछ हिस्सा निकाल लें. ठीक है, तो वो एरर जनरेट नहीं करेगा. लुक दिस एग्जांपल TPL इक्वल्स टू 10 12 14 20 22 24 30 32 एंड 34. We start from 3. तो इसका मीन्स 0 इंडेक्स देन फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड. थर्ड इंडेक्स कहां से है? 20 से. तो 20 से स्टार्ट करेगा एंड टिल 29. 30 minus 1 29 but 29 elements are not present. 29 index are not present here. मतलब इतनी एलिमेंट्स है ही नहीं इसमें. इसमें सिर्फ क्या है? 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8. 8 तक ही है, आगे है नहीं. तो आगे कुछ नहीं है तो एरर नहीं देगा. ये थर्ड से स्टार्ट करेगा और जितने एलिमेंट्स इस लिस्ट में है वो जनरेट करके दे देगा आपको. लाइक 20 22 24 30 32 एंड 34. देखो गिविंग अपर लिमिट वे बियॉन्ड द साइज ऑफ द टपल. ये वाली लिमिट जो है अपर लिमिट दैट इज द बियॉन्ड द साइज. साइज हमारा था 9 एलिमेंट का, लेकिन ये आ गया उससे बाहर भी 30 एलिमेंट. तो बट द पाइथन रिटर्न एलिमेंट फ्रॉम टपल्स फॉलोइंग इन रेंज 3. ठीक है, तो मीन्स इस रेंज में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो दे देगा. मीन्स 3 से स्टार्ट करेगा और जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सब डिस्प्ले करेगा टिल 34 लास्ट एलिमेंट तक. सिमिलरली दिस वन TPL -15:7 -15 बट द लास्ट इंडेक्स क्या है? देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9. -9 इज द लास्ट इंडेक्स. ये आ रही -9 लास्ट में. ठीक है, और जबकि जाना कहां तक था? -15 तक. हुआ है ही नहीं तो कहां से स्टार्ट करेगा? फ्रॉम बिगिनिंग. शुरू कहां से होगा? स्टार्टिंग से 10 से आया. अब जाना कहां तक है? 7. अब 7 का मीन्स क्या है? एक कम जाएगा दैट इज 6. 7 का मतलब है एक कम दैट इज 6. तो देखो 0 1 2 3 4 5 और 6. 6 पे क्या मिला? 30. तो इट विल डिस्प्ले टिल 30. तो स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड फिनिश एट 30. देखो 10 12 14 20 22 24 30 like this. Is it clear? Is it clear or not? Reply me, Yes. everyone.